साल का एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान इज इक्वल टू 0 एक्सपीरियंस इन मिडिल ईस्ट रीजन। सो एक बंदा फ्रेश ग्रेड निकलता है पाकिस्तान से, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है अप्लाई करते हुए, उसको पहले यहाँ पे लोकल मार्केट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और आपका भी मोर लेस यही जर्नी रहा और काफ़ी ज़्यादा का मैंने देखा कि ऐसे ही रहता है। मैं अपनी पर्सनल जर्नी से अगर रिलेट करूं तो यस, इफ यू आर अंडरसेलिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट अंडरसेलिंग योरसेल्फ ओनली, यू आर मेकिंग दैट मार्केट रेट इन दैट पर्टिकुलर रेट खराब करने वाली बात हो जाती है। जॉब रोल्स की बात करते हैं, सो क्या डाटा इंजीनियर ज़्यादा मांग रहे हैं या डाटा साइंटिस्ट ज़्यादा मांग रहे हैं? किस किस्म के बंदे मांग रहे हैं? क्योंकि या लाइक यू एक्सप्लेन कि देयर इज अ थिन लाइन और वो लिखा डाटा साइंटिस्ट होता है, नीचे की लिखा होता है स्किल की जी एक्सेल पे काम करना है आपने। तो एम्प्लॉयर साइड पे भी अवेयरनेस का मसला हमेशा से रहा है और रहेगा आगे भी, मुझे लगता है ऐसा। तो लेकिन चले हम स्किल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि कौन से स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है। एक सेंट्रलाइज्ड रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। Resume you should be changing your resume every time based on the JD or the job description itself. First of all, this is my humble opinion in this regard कि उसके अंदर आप मतलब ये नहीं है कि एक आपने सिंपल एक जनरलाइज सॉर्ट ऑफ अ थिंग बना रही है, सब कुछ डाल दिया है और बस हर जगह वो हिट करे जा रहे हैं। डू योर बेस्ट, बाकी अल्लाह ताला साथ मदद करते हैं। अगर मैंने ये देखा कोई बंदा मेहनत कर रहा हो तो सूनर और लेटर कुछ ना कुछ आपको ज़रूर अल्लाह ताला ज़रूर प्रोवाइड करते हैं और ज़रूर आपको मिलता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट उमर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर डाटा प्रोफेशनल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही सीनियर गेस्ट मौजूद हैं। ही हिमसेल्फ इज़ वर्किंग इन मिडिल ईस्टर्न रीजन। ही इज़ द हेड ऑफ डाटा साइंस इन Asiacell, which is Ooredoo organization. Please welcome the great Shoaib Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? Thank you for coming to the show, Shoaib. थैंक यू। So कैसे आना हुआ पाकिस्तान? छुट्टियों पे बस सही। 2 हफ्ते की छुट्टी जल्दी से मिली और उसके बाद जल्दी से सब चीजें कर आके मिला के घर वालों से वापस दोबारा अब चले जाएंगे Perfect. चले, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो वंस अगेन। और सबसे पहले जो हर अपने सारे गेस्ट से जो सवाल पूछता हूँ मैं आपसे भी वही पूछूंगा कि माशाल्लाह यू आर हेड ऑफ डाटा साइंस इन वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन इराक। तो how has been your journey so far, mashallah, the key milestones of your professional career, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। जरूर। By the way, I have started my journey like back in 2010-11 junior web developer शुरू किया मैंने। अच्छा, मेरे वाला काम आपने भी किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही और बहुत मजे की चीज थी। I started with like PHP, right? और एक मजा, उसमें एक अलग सेटिस्फेक्शन होती थी। आप कुछ कर रहे हैं और फ्रंट एंड पे आपकी कोई वर्किंग आ रही है, उसके साथ साथ आपको कोई फंक्शनैलिटी इंक्लूड की है, नई इंटीग्रेट की है, वो एक मजे की चीज थी। मूविंग फॉरवर्ड बड़ा कम टेन्योर लगाया। उसके बाद मैं गया पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, व्हिच इज लाइक अ सब्सिडरी ऑफ FBR, which is handling all web application and also the data warehouse. They moved me towards the data warehouse department. Okay. और ऐसा कोई डिफरेंस उस वक्त, as of now, as you know, back in 2010 there was awareness on data part like data analytics, data science, but not that much. तो मैं सर वहाँ जाके मैं एप्लीकेशंस लिखता था कि मुझे वेब डेवलपमेंट में डालो, राइट? लाइक काफी ज्यादा मैंने एप्लीकेशंस लिखी, काफी ज्यादा मैंने किया। मैंने कहा यार मुझे वेब डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि एक वो डायरेक्ट उसमें एक आउटपुट और एक रिलेशनशिप होता था और एक मजा आता था कोडिंग करने का। बट ग्रेजुअली I've started to understand कि यार ये तो फील्ड is the scope of opportunities and itself the scope of work itself as well बहुत मजे का काम लगा मुझे। एंड देन आई हैव जॉइंड यूफोन में मैंने काम किया। मेंटोर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आई वुड से। उन्होंने साथ अली हसन बुखारी होते थे मेरे साथ, मेरे पहले मैनेजर होते हैं। तो फिर मुझे मजा आना शुरू हुआ और डेटा से किस तरह हाउ यू डिफाइन और हाउ यू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू इनसाइट्स दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस। ब्रिलियंट। वो वहां से डेटा की जर्नी मेरी शुरू हुई एंड इट्स बिन लाइक एस्टोनिशिंग जर्नी, आई वुड से। मूविंग फॉरवर्ड फिर different experiences हैं। The one thing you mentioned, like in my opinion, मेरे milestones क्या थे कि in the start of my career, at least for 6-7 years, I have never ever considered like a salary sort of a part on a higher weightage. Perfect. मुझे ये था कि if like where there is an opportunity और मुझे वहाँ learning का scope और learning मिलेगी, I straight away switch to that particular company. मूविंग फॉरवर्ड फिर टेरेटा पे मैंने काम किया, टेरेटा के अंदर काम किया। एंड देन टेरेटा में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट, आई वुड से, एक्सपीरियंस इन दिस, आई वुड से, इन दिस डोमेन। फिर मूविंग बैक लाइक टेलीनॉर मेरा टेरेटा में मैं मोबाइली गया था। मोबाइली पे मैं काफी अर्सा प्रोजेक्ट पे रहा। अच्छा।
काफ़ी अर्सा वहाँ काम किया, लेकिन उस वक्त अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन करंट उस वक्त के सर्कमस्टांसेस फिर मैं वो परसू नहीं कर सका। ठीक। Then finally I went to Asiacell और वहाँ पे मैं एज एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट गया था। राइट। और फिर like 4 years back, then I have been promoted to a manager, and now I have a team of data science, complete a team of data science there as well. Mashallah. So this was the journey, and the milestones is like it should be an aptitude for data, right? Like if I'm doing something, मुझे एक business problem मिला है, the satisfaction you feel after resolving that problem, it's unmatchable. Yeah. It's unmatchable. So that aptitude, I believe, was there. That was one of the key milestones, I would say, and how to relate the story. The data science itself, like the storytelling is the major portion. That like how this model or any machine learning model, how it will help the business eventually. Right. So that would be the major part. And secondly, as I mentioned, कि जो start of the career, like learning should be the top priority. I believe that helped me a lot in terms of where I am as of now. So data is your first love. Yes, now this you can say that. Yes, yeah, ऐसा ही है। Your wife must be jealous of that. यही है, हाँ। पहला प्यार तो फिर आप कभी नहीं इग्नोर कर सकते। हाँ, वो होता है, लेकिन वो होता है कि उनके नसीब से मिल रहा है, सबसे पहले ये होता है कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो वो बेगम के नसीब का होता है, बुरा मेरे अपने खाते में आता है। ये कहा जाता है बिल्कुल। ये चीज ही है। तो माशाल्लाह, that's an amazing journey. Yes. और उसमें when I got to know you, you were at that time working in Telenor. Yes. और Dice Analytics के साथ फिर आपकी engagement रही काफी अर्सा. Yes. It's been about 6 years. माशाल्लाह, we are we have been engaged directly or indirectly. तो Dice के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा? Dice के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने ये चीज मैंने स्पेसिफिक उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि इट्स बिन लाइक दैट टीचिंग पाथ। मुझे याद है मैं जब पहली बार आया था बैक इन 2017 और जो पहला मेरा सेशन था क्लास के साथ, आई वाज लाइक अ बिट कंफ्यूज्ड, राइट? लेकिन आफ्टर दैट इतना एक अच्छा एक्सपीरियंस बना, और टिल नाउ इट्स हेल्पिंग मी अ लॉट that if you are a mentor to someone, और itself जब आप किसी को पढ़ा रहे हैं, कुछ पार्ट आपका वो उसके लिए हेल्पफुल होता है in securing a job. I would say it's like that sense of, I would say, happiness is unmatchable. जिस तरह डाइस ने जो awareness create की है, before that there was no such institute that is specifically targeting the field of data analytics, machine learning, AI. So it's been a wonder for personally me. It's been a wonderful journey. Like currently, if I am able to present, or like the public speaking skills, what I have as of now, it's like major part. Like I got it from Dice, from my experience. Perfect. So it's very good, and that sense of achievement. Like if some of your student is securing a job, or if he is growing, it's unmatchable. This is the thing. Perfect. जबरदस्त। ओके शोएब, सो मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि मिडिल ईस्टर्न रीजन में बड़ा आजकल बूम है जी आपका, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबियन मार्केट में, नियॉम सिटी एंड एवरीथिंग, स्टार्टअप फंडिंग, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर ओपनिंग अप, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ बूमिंग मार्केट फॉर करियर डाटा प्रोफेशनल्स फॉर देयर करियर सक्सेस। लेकिन मेरा सवाल ये था कि कितना, मतलब if somebody wants to go just for the sake of making money, तो कितना पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग I know, data scientists, data engineers that are sitting in Pakistan and remote jobs कर रहे हैं US के साथ, they are making about $10,000-12,000 a month. तो why would somebody want to go to Saudi Arabia, leave his family, leave his country, leave his hometown and work in Saudi Arabia, या overall Middle Eastern region की कतर, ओमान, इराक की बात करें तो? Yes, you are right completely. First of all, it's a booming market, first of all. Secondly, yes, there are opportunities in the remote work as well, as you mentioned. But the perspective, or what I can say, I can break it into two parts, first of all. The पहली चीज़ ये है कि सिर्फ पैसा, yes, अगर मैं Middle East की, let's suppose दुबई की बात करूँ, तो salary is it's very subjective thing. But I can say a range of 19,000 dirham to 35,000 to 45,000 dirham itself as well.
But yes, the opportunities are there. कैलकुलेटर निकाल के सर कन्वर्ट करके कन्वर्ट करके ये हम बाहर वालों के लिए हमारे दिमाग में सब कुछ आ जाता है. हम मतलब स्टार्ट में जब मैं बाहर गया मिडिल ईस्ट तो I was like I calculated myself that ये पाकिस्तानी रुपए में तो ये इतनी बनती है मैं नहीं ले सकता. Now the conversion rate is different from now. Like अब मेरी वाइफ कहीं जाती है, we went to Dubai. My wife asked me ये इराकी दिनार में कितने का होगा? I said like now we have a third part as well. पाकिस्तान आते हुए भी ऐसे होता होगा. पाकिस्तान आके अब हाँ ये सही है कि यार ये तो बहुत महंगा हो गया है ये चीजें तो ये इस तरह चलता रहता है. अब इराकी दिनार में अब करते हैं ये भी मल्टीप्लायर अब आ गया है उसमें. Sorry for the interruption. No worries. So almost 19,000 to 35 to 40K, but it depends like it's a subjective like the data analyst, then फिर machine learning engineer आ जाते हैं, फिर data scientist आ जाते हैं. Along with that the position itself as well, right? Like manager, senior manager, or if you are on the expert level or on the executive or developer sort of a thing. Now the question is that yes, the remote work versus like why a person should go out, right? Like in my opinion, it's my personal opinion. Anyone can, I would say, disagree with it. The more physical the interaction is, like I would say the learning curve is a bit different on this one, and the opportunity areas in terms of, for example, if I talk specifically about the business or data science itself, business is the key part and I would key major pillar in the field of data science. For machine learning engineer, there are a lot of terms now and there are very thin boundaries in between. So you cannot particularly define a particular job description itself. Correct. As well. So उसमें फिर I would suggest if you are going towards something, so in data science you are also being attached with some business industry as well. Data science is not only the machine learning algorithm itself, you want to train the model. So उसके साथ फिर वो जो particular experience, if you are going there, I would say that would be a kind of a different experience itself as well. But yes, like काफी families जा रही हैं पाकिस्तान से बाहर, काफी लोग जा रहे हैं with families and they have a wonderful experience itself as well. Perfect. तो डाटा साइंस की अगर मिडिल ईस्ट रीजन की इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे पाकिस्तान में तो यू नो टेलीकॉम सेक्टर हैज़ बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर इन डेवलपिंग दिस डाटा साइंस इकोसिस्टम पूरा का पूरा, और उसके बाद फिर अब बैंकिंग सेक्टर और हेल्थ केयर में काम काफ़ी हो रहा है. तो मिडिल ईस्टर्न रीजन में अगर हम इराक की बात करें या सऊदी अरेबिया की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर द टॉप इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस कर रही है डाटा एनालिटिक्स की या ओवरऑल? इन माय ओपिनियन लाइक पहले यही था कि मेजर जो स्ट्रीम्स थी या मेजर यूनिट्स जो थे इन टर्म्स ऑफ लाइक द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, हम स्पेसिफिकली बात करें तो टेलीकॉम था. अब ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा है. अब आपकी करीम, ऊबर, ये सारी जो एप्स हैं, मोस्टली मेरे ख्याल से जो बूमिंग है, एक तो आपने विजन इटसेल्फ सऊदी का डिस्कस किया, विजन 2030, and on this vision there are a lot of opportunities being created first of all, but along with that a lot of startups are happening there as well. In Dubai, in Iraq, in Saudi, Oman, Qatar, a lot of startups are being happening, and like those startups need a set like some particular department related to the data science field. So I like startups, first of all I would say now is a booming market itself as well. और उसमें in my opinion वो एक as a data science नहीं कि आपको like you will be getting a very cooked data from one data engineer. It might be there is a term unicorn data scientist, that from end to end you might be doing, or you end to end cycle you might be doing for the like extracting the data and completely transforming it, उसका पूरा ML or data pipeline, then you go towards the machine learning part. So that is a like I would say startups. Then we have like the Vision 2030. Like there are a lot of initiatives that are being going underway as well. And telecom still is there, e-commerce is there. So these are the I would say the major areas I would say there where the market is booming. Yes. So अगर हम आ जाते हैं स्किल्स के ऊपर आ जाते हैं कि मतलब हमने पहले बात कर ली कि यार ठीक है पैसे कितने छाप सकते हैं. हमने बात कर ली कि कौन से सेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा जॉब्स. तो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, खुसूसन डाटा साइंस के अंदर डोमेन एक्सपर्टीज़. तो अब हम लोग स्किल्स की बात करते हैं अगर या जॉब रोल्स की बात करते हैं, सो क्या डाटा इंजीनियर ज़्यादा मांग रहे हैं या डाटा साइंटिस्ट ज़्यादा मांग रहे हैं? किस किस्म के बंदे मांग रहे हैं? क्योंकि या लाइक यू एक्सप्लेन कि देयर इज़ अ थिन लाइन, और वो लिखा डाटा साइंटिस्ट होता है, नीचे के लिखा होता है स्किल की जी एक्सेल पे काम करना है आपने. तो एम्प्लॉयर साइड पे भी अवेयरनेस का मसला हमेशा से रहा है और रहेगा आगे भी, मुझे लगता है ऐसा.
तो लेकिन चले हम स्किल स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि कौन से स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है। इन माय ओपिनियन लाइक पहले यही था कि मेजर जो स्ट्रीम्स थी या मेजर यूनिट्स जो थे इन टर्म्स ऑफ लाइक द फील्ड ऑफ डेटा साइंस, हम स्पेसिफिकली बात करें तो टेलीकॉम था। अब ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा है। अब आपकी ये करीम, ऊबर, ये सारी जो एप्स हैं, मोस्टली मेरे ख्याल से जो बूमिंग है, एक तो आपने विजन इटसेल्फ सऊदी का डिस्कस किया, विजन 2030, एंड on this vision there are a lot of opportunities being created first of all, but along with that a lot of startups are happening there as well, in Dubai, in Iraq, in Saudi, Oman, Qatar. A lot of startups are being happening, and like those startups need a set like some particular department related to the data science field. So I like startups, first of all I would say now is a booming market itself as well. और उसमें in my opinion वो एक ऐसा डेटा साइंस नहीं कि आपको like you will be getting a very cooked data from one data engineer. It might be there is a term unicorn data scientist, that from end to end you might be doing, or you end to end cycle you might be doing for the like extracting the data and completely transforming it, uska pura ML or data pipeline, then you go towards the machine learning part. So that is a like I would say startups. Then we have like the Vision 2030. It's like there are a lot of initiatives that are being going underway as well. And telecom still is there, e-commerce is there. So these are the I would say the major areas I would say there where the market is booming. Yes. ओके शोएब, तो अब मुझे बताइएगा कि ठीक है जी, मुझे ये भी पता है कि कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जॉब ढूंढे कैसे यहाँ से बैठ के, द पीपल दैट वांट टू एक्चुअली मूव टू मिडिल ईस्टर्न रीजन, आर देयर एनी स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स या लिंक्डइन के थ्रू करें, या कोई विजिट वीज़ा लेके तो जाएं, या उम्रे का वीज़ा कटा के तो फिर जाके इंटरव्यूज देकर आ जाए, ऐसे भी हो सकता है? Itself it's a science right to secure a job. First of all secure a interview. अब LinkedIn पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आती है कि बंदा कहता है कि यार जाऊँ मैं LinkedIn जॉब सर्च की, तो सबसे पहले जिस पे आ रहा है ना इजी अप्लाई, उस पर क्लिक करके बंदा, मैं आसान काम है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उनके पास सबमिट हो जाती है, लेकिन उसमें हज़ारों रिज्यूमेज या हज़ारों एप्लीकेशन इस तरीके से सबमिट होती है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूमे एक सेंट्रलाइज्ड रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। Resume you should be changing your resume every time based on the JD or the job description itself. First of all, this is my humble opinion in this regard, कि उसके अंदर आप मतलब ये नहीं है कि एक आपने सिंपल एक जनरलाइज सॉर्ट ऑफ अ थिंग बना रही है, सब कुछ डाल दिया है और बस हर जगह वो हिट करे जा रहे हैं। और ऑब्वियसली बात लाइक काफ़ी एप्लीकेंट्स कर रहे हैं अप्लाई, तो it would be like very low chances of securing an interview, because the first step is securing an interview itself as well, which is like a lot of times you are applying and you will not get. So this is the first thing, and like the keywords you need to use first of all in your resume itself as well, based on the JD, because you know we are in the field of AI and there are multiple softwares of AI that are being used to shortlist the resumes first as a first phase. So you need to find out, or you need to see, or you need to understand now the chat GPT is here. It's really easy itself as well. Like हमारे ज़माने में होती तो हम पता नहीं क्या मतलब ऐसी assignments हमने अपने खुद सोच के किया सारा कुछ तो वो चीज़ है। Secondly, the second part is like your LinkedIn profile itself as well. I would say first of all the LinkedIn portal itself, like मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इंटरव्यू सिक्योर करने के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू माइट सिक्योर एन इंटरव्यू इटसेल्फ एज वेल, एंड देन फॉर श्योर इन द इंटरव्यू देयर वुड बी अ डिफरेंट जर्नी दैट हाउ यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ, बट यू नीड टू फर्स्ट गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। देन लिंक्डइन प्रोफाइल लोगों की काफ़ी सिंपल, और उसमें आप कीवर्ड्स डालें, आप प्रॉपरली जहाँ पे आप फिट इन हो रहे हैं वहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर आप कीवर्ड्स और उसी प्रोफाइल के साथ अगर आप जाते हैं, अगर आपकी हो रही है, तो आई थिंक इट वुड बी रियली हेल्पफुल। थर्ड इज लाइक द गाय हु इज posting the job, if you can reach him out. The cover letters we usually like ignore, or we don't like put so much efforts there. So I think a comprehensive or concise cover letter that is highlighting the specific skills that is, I would say, relating, or that is relating to the job description, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी।
ये चीजें हैं. आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके से अगर या हमें मतलब लाइक इट शुड बी अ प्रोजेक्ट फॉर यू दैट इफ यू आर अप्लाइंग टू इट लाइक यू शुड बी कम्प्लीटली इनटू इट. लाइक ये नहीं है कि आप जाएं और बस अप्लाई कर दिया बाकी अल्लाह की मर्जी जो होना है. तो वो चीज़ है. तो फर्स्ट देन यू सिक्योर एन इंटरव्यू. यस देन यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक इंटरव्यूज देने में पहले हमारी भी हालत थोड़ा सा वो होता था कि यार क्या क्या पूछेंगे. लेकिन you need to set a tone like on the projects on which you want to, I would say, highlight, or that would be highly relatable to that job as well, itself as well. But there are a lot of people who are there. The last part is the connections. I would say that would help us. That would help a person a lot because like recommendation एक जब चली जाती है तो जो recruiter होता है या जो hire कर रहा है, I think उसको एक थोड़ा सा sense of एक like he should be like comfort होता है कि वो मतलब कि यार इसकी recommendation है तो वो आ सकता है. तो ये चीजें I would say that like that helped me as itself as well, that I have heard from the students and everywhere कि ये helpful हो सकती है. Indeed.com है, LinkedIn is a like LinkedIn itself it's like a very good I would say platform for securing and showcasing the part. डेटा साइंस में GitHub है आपके पास. इफ यू आर अ Power BI developer you have the public Power BI, Tableau, so you can showcase your skills there as well. Like you can share the links, you can share like you can showcase your skills. There are a lot of platforms now कि जो आप अपने skills को showcase कर सकते हैं. बिल्कुल सही. So मैंने जो देखा कि you know 2 साल का experience in Pakistan is equal to 0 experience in Middle Eastern region. So एक बंदा फ्रेश ग्रेड निकलता है पाकिस्तान से, वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है अप्लाई करते हुए, उसको पहले यहाँ पे लोकल मार्केट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए. और आपका भी मोर लेस यही जर्नी रहा और काफ़ी ज़्यादा का मैंने देखा कि ऐसे ही रहता है. मैं अपनी पर्सनल जर्नी से अगर रिलेट करूँ तो यस आई वुड से कि if a guy like if you can put yourself as a like you are a recruiter in the Middle East. I'm sorry, I'm just doing it a lot. If you are a recruiter in like in Middle East, so obviously you need a plug and play sort of a person, right? Like that person would come in and like he would start working right away, or like then he would he will be taking the responsibilities of the work itself. So yes, मेरे ख्याल से I will agree कि मतलब experience is important. Like if you have 2-3 years of experience, you have a better chances of securing a job in the Middle East region. So my next question is कि ठीक है हमने जॉब ढूंढना शुरू की, एक फ्रेश ग्रेड ने या लेट्स से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था और उसको ऑफर्स आना शुरू हो गई. ही started getting interview calls. एक और चीज़ जो हमने देखी कि पाकिस्तानी अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडरसेल कर देते हैं, निगोशिएट नहीं कर पाते सही तरीके से. जो बेनिफिट्स हैं, जो कंपनसेशन है, सैलरी है, बोनसेस हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है कि एक बंदा हु इज़ अबाउट टू स्टार्ट हु इज़ अबाउट टू आई मीन ही इज़ गेटिंग ए जॉब ऑफर, उसको किस किस्म की चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए निगोशिएट करते हुए अपनी जॉब ऑफर को? First sentence, never show the frustration part, like of leaving your existing or whatever the circumstances are, right? That like the recruiter knows, like even in Middle East they know that each and everything, like कि पाकिस्तानी हालात कैसे चल रहे हैं, right? So you need to be careful. You don't need to commit like very early. I think you need to do your research क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कोई ना कोई पाकिस्तानी भाई मिल जाते हैं या कुछ उससे आइडिया हो जाता है. क्योंकि itself if you are underselling yourself, you are not underselling yourself only. You are making that market rate in that particular rate खराब करने वाली बात हो जाती है. तो मेरे पास भी जब वहाँ पे अगर कोई कुछ पूछता है और वो क्योंकि करंट हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, वो कहते हैं कि यार लाइक अभी जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, लाइक दूसरों का फिर मार्केट रेट खराब हो जाएगा और वो सारा जो एक एवरेज है ना वो नीचे आ जाएगी. तो यस, first consider, ask, like you need to, it's not only salary itself, you need to ask about the other perspective or other additional things that are attached with it. For example, टिकट्स या मेडिकल इंश्योरेंस, हाउ मच, बिकॉज ये चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये इन द फ्यूचर लॉन्गर रन it sometimes take a major part of your portion of your salary itself as well. So first of all, don't overcommit or like commit very early, right? Like think over it, take some suggestions from the person or from the people around, and then like negotiate. You should be negotiating, like you should not have that पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के यार अगर मैं इतना कहूँगा तो ये मुझे छोड़ देंगे. एटलीस्ट वो अगर आप कहेंगे ना कि यार मैं अगर 5,000 बोला है तो अगर आप कह रहे हैं 10,000 चाहिए, तो ये नहीं कहेगा मैं नहीं बात करता, वो कहेगा दिस इज द लास्ट ऑप्शन, देन यू कैन
again play with this particular thing. So you don't need to be in a hurry first of all, and don't need to show your frustration part as well. That is like that would be my suggestion in this regard. चले जॉब मिल गई, बंदा पहुंच गया मिडिल ईस्ट रीजन में, जैसे सऊदीया पहुंच गया, अब उसको समझ आती है कि यार ये अरबी तो बड़े बदतमीज हैं, ये तो गोरे के साथ जो है वो अंग्रेजी में बात करते हैं, हमारे सामने कहते हैं कि जी हमें अंग्रेजी नहीं आती, अरबी में बात करो हमारे साथ। और फिर पता चलता है कि उसके साथ में उसी के एक्सपीरियंस लेवल पे कॉलीग है जो कि गोरा है, यूएस से आया हुआ है, यूके से आया हुआ है, यूरोप से आया हुआ है, उसको डबल पे कर रहे हैं, इसको जो है वो आधी पे कर रहे हैं, तो बंदा तो एकदम से उधर जाके एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ये चीज आप कुछ कहे तो सही रहे। सऊदी एक बार मैं गया जा चुका हूँ, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ एज वेल। अच्छा, इराक में हैव एक्सपीरियंस दिस? Iraq is a bit a different market there, but like it's not that much like, but like yes, in a generalized term, अगर मैं इधर उधर से भी देखूँ तो yes, there is a perception which is like true itself as well. So first of all, yes, the soft skills. Here comes the soft skills part, like which is being ignored. Like emotional intelligence, like these things are not being talked about at all, right? And these are the major portions. अगर एक आप काम कर रहे हैं और आप उसको बता नहीं सकते ना या दिखा नहीं सकते जिस तरीके से आपने किया, तो it's of no use first of all. So like the first thing, बहुत से पाकिस्तानी adoptable हमारी है, एक sort of हमारी upbringing ऐसी है, we are like easily adoptable or easily adopting the particular cultures or like the things. So the major thing is adopting to the nature, right? Like first of all, like you need to understand the culture itself. Like ये चीज बहुत ज़्यादा important है. अगर हाँ कंपैरिजन में अगर आप पढ़ जाएंगे तो आई वुड सजेस्ट इट शुड नॉट बी द कंपैरिजन। आप बस अपनी प्रीवियस पाकिस्तान से कंपेयर करें सैलरी को और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो वो चीज वैसा फेस हो जाएगा। लेकिन अडॉप्टेबिलिटी सर इज द मेजर पार्ट, लाइक हाउ यू नीड टू अडॉप्ट देयर। लाइक आप क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के कल्चर मिलेंगे आपको कोई बंदा मिलेगा जो एक कल्चर मिलेगा जहाँ पे आपको वर्बली काम कहा जाएगा, आप वर्बली कर देंगे और वो वर्बली पे ही आपकी आस्किंग हो जाएगी कि यार ये क्या किया, ये तो नहीं कहा था। तो समटाइम्स यू नीड टू अडॉप्ट, ठीक है कि अगली बार मैंने कुछ करना है तो आई वुड बी आस्किंग ऑन द फॉर्मल ईमेल्स इटसेल्फ। इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल्स बट देयर वुड बी 100 मल्टीपल सिनेरियोज देयर, राइट? सो अडॉप्टेबिलिटी नॉट ऑन द आई वुड एक्सपेंस ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज मैं हर पाकिस्तानी हर एक को कहता हूँ, नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट यस यू नीड टू बी अडॉप्टेबल क्योंकि आप एक नेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड यू शुड बी have that sense of managing or like as a communication skills, right? Like if something have been told or have been assigned to you, how you need to deliver it, what is the process, if you need to ask something in what manner you need to ask it, if there is a deadline that has been passed by, how you need to handle it. So all this part of that part is like it's coming from the emotional intelligence or from the soft skills part. You need to show that side itself as well. Right. Yeah. लेकिन होता है मेरे साथ भी पर्सनली, सऊदी में मैं गया था तो मैं जाके मैं कहता था सर ये आपने मुझे काम दिया हुआ है, ये मुझे करना है, ये आप प्लीज़ मुझे भेज दें। हालांकि मैं एज अ कंसल्टेंट था, वो मेरे क्लाइंट थे, मैं उनको जाके कह रहा हूँ, बट लाइक समवन टोल्ड मी, माय मैनेजर शहजाद खटक होते थे, ही टोल्ड मी दैट लाइक देयर इज अ वे ऑफ लाइक changing it, like you need to in a requesting manner or you need to do it on the formal emails rather than going, so you need to adopt accordingly, right? Like this is like something, but you need to make sure that you are going with a growth sort of mindset and adoptable mindset, that like there the culture would be different mindset, yes, you have to adapt to the culture, you have to adapt to the culture, you have to make your place and how you need to make your value itself as well. right. So those people that want to take their families, so एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है पाकिस्तानियों का कि वहाँ पे यार एजुकेशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब बच्चों के लिए स्कूल, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ तो वो शहजादों के लिए अपने उन्होंने बनाई है। तो स्कूलिंग के हिसाब से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? योर फैमिली इज विद यू, राइट? अच्छा, इराक जो है वो अ बिट डिफरेंट विद द अदर मिडिल ईस्टर्न मार्केट। इट्स स्टिल लाइक आई वुड से अंडर रीच, लाइक इट्स नॉट दैट मच एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू द मिडिल ईस्ट मार्केट। अगर हम बात करें दुबई, ओमान, कतर, इट्स रियली एक्सपेंसिव, लेकिन it's on the expense of like you are living with your own family, right? Like so obviously I will go back to your previous question, right? Like so when I'm negotiating a salary, I would be considering all those factors itself as well, right? Yes. That how if मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि परदेश काट रहे हो और पैसा नहीं कमा रहे तो परदेश काटने का क्या फायदा? ठीक है, अगर लाखों रुपया नहीं आ रहा, बच नहीं रहा, तो परदेश काटने का फायदा क्या है? फिर आप परदेश क्यों काटें? फिर अपने मुल्क में रहे आप, अगर आपने वही हैंड टू माउथ ही चलना है।
तो ये पार्ट यू शुड बी कंसिडरिंग इट, यस, बट लाइक ऑन द लाइक ऑब्वियसली लिविंग विद फैमिली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आप अकेले जा सकते हैं, कुछ की मजबूरियां भी होती हैं कुछ भाइयों की कि पैसे ऑब्वियसली बात है ज्यादा बचते हैं, लेकिन यू शुड बी नेगोशिएटिंग एट दैट लेवल. बट इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन दैट इज कैन बी आल्सो पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन इटसेल्फ एज वेल. Like a lot of companies are also, I would say, in Middle East itself, a lot of companies are offering a education allowance or the education of up to two children. So ये आप negotiation के वक्त कर सकते हैं, लेकिन itself अगर आप personally कर रहे हैं तो yes, you should be expecting कि it can go like to a very high range itself as well. तो ये चीज़ें आपने वाकई देखनी होंगी. और yes, on the expense of फैमिली आप रखेंगे तो आपके पास पैसे तो कब बचेंगे, कम बचेंगे, या वो डिपेंड करता है क्या आपकी सैलरी है. लेकिन फैमिली से दूर रहना भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा फिजिबल आइडिया नहीं है कि आपके बच्चे जब ग्रोइंग एज में तो दे शुड बी अवे. Because none of these countries offer any immigration kind of thing. Yes. तो मतलब at the end of the day you have to come back. जिस दिन आप गए तो आप निकले आप वापस अपने मुल्क के. हाँ. तो वो चीज़ तो है. उस लिहाज से देखा जाए तो how would you compare to other regions, जैसे कनाडा भी मूव करता है, यूएस मूव करता है. वो इट्स अ बिट डिफरेंट मार्केट. यूएस को मैं अलग रखता हूँ, बाकी मार्केट्स को मैं अलग रखूंगा. यूएस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ मार्केट देयर, राइट. इफ यू आर गोइंग टू द ऑस्ट्रेलिया, इफ यू आर गोइंग टू कनाडा और यूरोप, सर दौलत नहीं कमाई जाएगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से. दौलत कमाने के लिए दौलत कमाने के लिए यस, द लाइफस्टाइल इट इज अ लाइक इट्स कंप्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल है. एक आपको यस एक परमानेंट ऑप्शन जरूर मिल रहा है, लेकिन जब दौलत कमाने का अगर सिर्फ ये पर्पस है, then Middle East is the option or the right. I've seen a lot of people actually moving to Canada, moving to UK for the PR, the immigration लेके. Then they move to Middle Eastern region दौलत कमाने के लिए. दौलत कम और वो डबल कमाएंगे. वो फिर डबल कमाएंगे. क्योंकि एक यूके पासपोर्ट पे जो आता है ना बंदा, और आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जा रहे होते हैं, वो जो आपने पहले बात की थी, बंदा कहता है यार काम तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन चले फिर यही चीज हो जाती है कि वो फिर डिफरेंट. लेकिन वो वहाँ पे अगर हम यूएस मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंटली. यूएस में मुझे लगता है कि 50% बिजनेस वहाँ है, बाकी 50% पूरी दुनिया में चल रहा है. वहाँ सर छोटा सा शॉपकीपर या छोटा, हमारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है वहाँ होता है, तो वो एक छोटा सा शॉपकीपर भी कहता है मुझे पावर बीआई चाहिए, मुझे एनालाइज करना है, मुझे सेल्स को देखना है कि किस तरह चल रही है. वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट मार्केट. और सारे मेजर जाइंट वहीं पे बैठे हुए, माइक्रो स्ट्रेटेजी, पावर बीआई, सारे मेजर लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे वहीं रिजाइड करते हैं. तो वो एक कम्प्लीटली वो दौलत कमाना वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है. So, Shoaib, talking of the career journey, road map की अगर बात करें तो जैसे आपने अपना पूरा एक माशाल्लाह जर्नी बताया, like 6 years of your career, first 6 years of your career, आपने पैसे को तो देखा ही नहीं ना, you just you know looked for the learning experience, कहाँ से अच्छा सीखने को मिल रहा है. तो how would you what would you advise के हमारे आजकल के जो यंग जनरेशन है जो डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स की डोमेन में स्टेप इन होना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करियर जर्नी अडॉप्ट करना चाहिए? मतलब क्या वो सऊदी अरबिया में जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट रीजन में जा रहे हैं, कहीं पे भी, या पाकिस्तान में काम करते हैं, तो लेट्स से कि फर्स्ट 3 years किन किन चीज़ों को फोकस करना है उनको अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द सॉफ्ट स्किल्स, किन किन एरियाज पे सॉफ्ट स्किल्स पे उसको फोकस करना है अपने आप को पॉलिश करने के लिए, और फिर उसके बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी जर्नी है मैं उसी से रिलेट करूंगा और उसी का रिकमेंडेशन दूंगा दैट यू शुड बी गोइंग फॉर द सक्सेस. लाइक मुझे 3 Idiots याद आ जाती है, लेकिन ये वाकई एक करामत फॉर्मूला है कि you should be following the success. The learning should be there, right? If the learning is there, eventually you'll get to the goal जो आपने अपने लिए बनाया है या डिसाइड किया है. मेहनत शॉर्टकट नहीं ढूंढे सब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मुझे काफी अब मुझे एक फील होता है कि देयर इज अ जनरेशन गैप, राइट, कि सर आप तो इतना कमा लेते हैं, बड़ा ज्यादा जा रहा है सारा, लेकिन आप मतलब you need to follow the journey, right? Like you need to be hardworking, you need to be like regardless of the obviously we all are working because like obviously there is a financial benefit on top of it. Lekin in the early stages of the career, the priority should be learning, and where you'll get the most out of it, right? टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो ये तो अब तो खैर इंटरनेट पे हर जगह वो कहने की जरूरत नहीं है कि पाइथन ये चीजें हैं, लेकिन यू नीड टू बी वेरी वेल डिफाइंड और वेरी वेल वर्स्ड ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन और ऑफ द लाइक आई वुड से कि कौन से डाटा इंजीनियरिंग की फील्ड है तो उसमें क्या क्या
क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, डेटा साइंस है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, डेटा एमएल इंजीनियर है तो मुझे किस पाथ पे जाना पड़ेगा. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वंस यू टेक दैट पार्ट and see if you have that aptitude as well itself as well. Aptitude is really important. It's not like financially मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये 4 लोग बड़ा कमा रहे हैं तो मैं भी कर, मुझे भी यही काम करना है. It might be they will be in data engineering, you might have an aptitude of something different, you are good in visualization, right, you will be a visualization expert rather than the data engineer, but you need to think, you need to explore yourself itself as well, and go for learning. And और बाहर जब जा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन इटसेल्फ, राइट, कि अब हमारे यहाँ एक जहाँ भी आप जाते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक इमेज आपका नहीं बनता, एज अ नेशन आपका बनता है यार पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, राइट. इवन इन माई कंपनी काफ़ी अच्छी, आई वुड से काफ़ी अच्छा इमेज है, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानीज ने काफ़ी ज़्यादा बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए, बहुत अच्छा काम किया, तो एक उनकी परसेप्शन बन गई कि यार इट्स गुड. और एक पाकिस्तानी भी आएगा और आके सारा चीजें खराब करके चला जाएगा और उसके बाद वो बाकी सब का दरवाजा बंद कर देगा. रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये थोड़ा सा इट्स नॉट गुड, बट लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स. Yes. So this is my like I would say recommendation to the young generation itself. तो जॉब ऑफर्स अक्सर आती हैं, लेट्स से वो मिडिल ईस्ट रीजन में आपको बैठा हुआ है, तो हम लोग अक्सर जॉब ऑफर्स आती हैं और जल्दबाजी कर जाते हैं स्विच करने में, और अक्सर लोगों से ये भी गलतियाँ हुई कि इंडस्ट्री स्विच कर दी. वो लेट्स से अभी 2 साल उसको मुश्किल से हुए थे टेलीकॉम में, कोई हेल्थ केयर वाली साइड से उसको ऑफर आ गई तो वो एकदम से उधर जंप कर गया. उसको 6 महीने बाद ये जाके रियलाइज हो गया यार गलती कर दी मैंने. गलती कर दी. तो इस तरह की सिचुएशंस को कैसे डील करना है? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर वो एक प्रॉपर कोट है कि if you make the decision, make it right. Like obviously you will try your best, like, but don't do, that's what I'm saying, don't do this or take this decision in frustration. कि कभी भी मैं अपनी जिंदगी में, मैंने पर्सनली और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, कभी भी ये डिसीजन इस बेस पे ना लें कि आपने पुरानी कंपनी को छोड़ना है. इस बेस पे कभी डिसीजन नहीं होना चाहिए इन माय हम्बल ओपिनियन. आपको हमेशा ये डिसीजन होना चाहिए व्हाई आई एम गोइंग देयर, आई शुड हैव दैट पार्ट, आई शुड नो दैट व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाट विल आई अचीव देयर इटसेल्फ एज वेल. लेकिन यस इट हैपेंस समटाइम्स, हो जाते हैं कुछ कभी लाइक इस तरह की चीजें, तो ऑब्वियसली यू नीड टू, आई वुड से कि लाइक यू नीड टू रिवर्ट बैक, और connections are very important, right? Yeah. Even if something goes wrong, obviously you need to be patient. You don't like take some rash decisions coming out of it, like कि मैं बस छोड़ के बाकी देखता हूँ. You should go back, like then you will go back again. पुरानी कंपनी में अगर आप अच्छा जाए, सलाम दुआ करके जाएंगे, तो क्या पता वो दोबारा रख भी. Connections are very important. ये नहीं है कि अगर आप एक कंपनी छोड़ रहे हैं कि भाई 2-4 सुना कर आ जाए आप, यानी सारी किश्तियां चला के और फिर एकदम से चले जाए. ये इतनी छोटी मार्केट है, I would say, कि आपको भी पता है कि हर बंदा कहीं ना कहीं किसी को कोई ना कोई जानता है, घूम फिर के वही पहुंच जाते हैं. सबको पता है कि कतर में कौन है डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए पाकिस्तानी, दुबई में कौन बैठा हुआ है, ओमान में कौन है, इराक में कौन है, सऊदी में कौन बैठा हुआ है. तो इतनी छोटी मार्केट है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड लाइक दिस, लाइक और यू नीड टू मेक, और लाइक यू नीड, इट्स पार्ट ऑफ अ जर्नी इटसेल्फ, दैट आपके अगर अच्छे दोस्त बनते हैं, अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, इट वुड बी रियली हेल्पफुल. परफेक्ट. आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं शोएब. आप अगर कंक्लूड करें इन सारी बातों को, कि यानी कि लेट्स से कि इफ समबडी कम्स टू यू एंड आस्क्स यू कि यार मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरी डिग्री खत्म हो रही है अगले महीने, और उसके बाद आई वांट टू मूव टू एनी ऑफ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सो व्हाट विल बी योर फाइनल एडवाइस, कंक्लूडिंग एडवाइस टू दैट पर्सन, समराइज करके अगर उसको बात करें. जैसे कि पहले बात हुई है, फ्रेश में it's not that like there will be no chance. For sure, like if you have done something astonishing, like any project in your final year, any product you have worked on, or not only experience, freelance, अब तो जिस हमारे 10-15 साल पहले से अगर अभी भी कंपेयर करें तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप बहुत कुछ शोकेस कर सकते हैं. So technical skills, that are the major, I would say, things like you need to focus on it. Major things everyone knows, Python है, machine learning models हैं, like not only machine learning itself बहुत basic now, the world goes to way above, like recommender models हैं, बहुत reinforcement learning है, lot of things, deep learning. So you need to be well aware, you need to have something to showcase to the recruiter itself as well, like what would be the reason, right? And like once you go and then do your best, बाकी अल्लाह ताला साथ मदद करते हैं. अगर मैंने देखा कोई बंदा मेहनत कर रहा हो तो sooner or later कुछ ना कुछ आपको जरूर
अल्लाह ताला ज़रूर प्रोवाइड करते हैं और ज़रूर आपको मिलता है. Focus on the resume, like if you are applying to some job and if you are very keen to get that job, you need to work it as a project, right? Like you need to understand the job description, how is it matching, how you can showcase, how your projects can showcase the relevancy to that job description, the milestones you have done. Reference कैसे ढूंढे बंदा? Reference sir, मतलब एक तो हम आपको टैग कर देंगे इस एपिसोड में, तो फिर आपको ये बहुत सारे लोग तंग करेंगे कि शोएब भाई हमें रेफर करते हैं, हमें इंटरव्यू दिलवाते हैं. अगर कुछ होता है तो दिल से खुशी होती है. डेफिनेटली ऑडियंस आप लोगों के लिए भी ये है कि अगर आपको लगता है कि आप उस कैलिपर पे हो और यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद शोएब एंड डेफिनेटली ही वुड लव टू रेफर. फॉर श्योर कनेक्शंस ये विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी बनते हैं आपके, लेकिन लिंक्डइन पे काफी बार कुछ लोग के कुछ रीच आउट करते हैं, कुछ को मैं नहीं दे सकता, कुछ को मैं प्रॉपर जर्नी अगर मुझे टाइम होता है मैं लाजमी सपोर्ट करता हूँ. इट्स नॉट दैट यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन, यस इट इज गुड बट लाइक यू कैन रीच आउट, राइट. और सबसे मैं यही कहूँगा कि जस्ट लाइक द प्रोफेशनल्स लाइक अस, वी शुड बी सपोर्टिंग द यूथ फॉर श्योर, राइट. कनेक्शंस विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड बेस्ड ऑन योर एथिक्स, लाइक और जो आपने काम किया है वो फिर खुद आपको जरूरत नहीं होती है, आपके बिहाफ पे लोग क्या होता है रिकमेंड करते हैं. if you are giving your 100%, so for sure you should be like you have that part or recommendations by yourselves as well. So this is it, I would say, like, and best of luck to you guys, and like the journey you are doing, it's been really helpful for the youth, I would say. मैंने काफी success stories देखी हैं, अपने सामने देखी हैं, अभी तक हम देखते आ रहे हैं, right? So keep moving forward, inshallah, and inshallah. Sure, and wish you Godspeed as well. Yes. All the very best in your career growth in the future. And thank you once again for coming to the show. Thanks to you for inviting us. Thank you. Thank you guys. Thank you. उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत मजे की लगी होगी ये एपिसोड और बहुत सारी इनसाइट्स मिली होंगी इसमें से. और इसी तरह की मजे की एपिसोड्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फ्यूचर एपिसोड्स को देखते रहिए. अपना ख्याल रखिएगा और फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज़.